Good morning, children. Today we will be dealing with the topic human ear. See, I have drawn before you the structure of human ear. Now you can clearly see this is pinna, auditory canal. This auditory canal is also known as ear canal. This is tympanum. Beta tympanum is also known as ear drum. We can see pinna, auditory canal, tympanum. And after tympanum, you can see malleus, incus, and stapes. Beta, these are the three ear bones, malleus, incus, stapes. And let me tell you the technical term. The technical term for these three ear bones are known as ear ossicle. They are known as ear ossicles. This you can see a station tube. This is a structure which connects the ear, the middle ear, with the throat. These are three semicircular canals. The base of the semicircular canal is swollen, you can see, and it is filled with a fluid. Right, it is filled with a fluid. I repeat, the base of the semicircular canal is swollen and is filled with a fluid. It is known as ampulla of semicircular canal. You can see the structure, utriculus, sacculus, the spiral shaped structure, cochlea. This is the auditory nerve. Right. See, children, now below in this page, you can see that I have drawn a flow chart, the divisions of the human ear. The human ear can be divided into three basic regions or the three basic parts. We can see outer ear, middle ear, and inner ear. You need to know this division because in the ICSE board exam paper, beta, they ask you the odd one out. And then you have to remember whether this structure comes in the middle ear or the outer ear or the inner ear. Now you can see in the outer ear, the structures which come are pinna, auditory canal, and tympanum. I repeat, children, pinna, auditory canal, and tympanum, which is also known as eardrum. You can see in this diagram, pinna, auditory canal, and tympanum. But till here, it is the outer ear. And in the middle ear, you can see the ear ossicles. The formula is MISS, malleus, incus, stapes. Then we have the round window, oval window, and a station tube. So in this structure, you can see these are the three ear bones. Then this is the station tube. और यहाँ पे स्टेशन ट्यूब में यहाँ पे होता है आपकी राउंड विंडो. और मैं आपको बता दूं बेटा, जो स्टेप्स बोन है वो ओवल विंडो में जाके फिट हो जाता है. आई रिपीट, जो स्टेप्स है आपका ओवल विंडो में जाके फिट हो जाता है. So this structure from here till here, it lies in the middle ear. And this whole structure, it comes in the inner ear. So what are those structures? Semicircular canals, you can see here down. Semicircular canals, utriculus, sacculus, cochlea, and auditory nerve. All these structures, they come in the inner ear. So let us talk about the functions of each and every part. Beta pinna. Pinna is the visible part of the ear. जो कान का जो हिस्सा हमें बाहर नजर आता है उसे पिना कहते हैं. So what is the function of the pinna? Pinna collects sound waves from the air and sends it into the auditory canal. पिना जो है हवा से, एयर से साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और ऑडिटरी कैनाल में पुश कर देता है. और ऑडिटरी कैनाल, जिसको हम ईयर कैनाल भी कहते हैं, इसका काम क्या है? इट इज जस्ट अ पैसेज थ्रू विच द साउंड वेव्स goes inside and reaches the eardrum, means the tympanum. So what is the function of the tympanum? ये ईयर ड्रम है और ड्रम के ऊपर बेटा, ईयर ड्रम के ऊपर जब साउंड वेव्स गिरती है तो धम धम करके आवाज निकलती है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशंस हो रही है. So the tympanum, it converts the sound waves into the sound vibrations. Then we have these three ear bones, malleus,
इनकस एंड स्टेप्स। ये तीनों के तीनों जो बोन्स हैं, ईयर बोन्स है जिसको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं बेटा, इनका काम होता है इट एम्पलीफाइज और इट इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द साउंड वाइब्रेशंस, और इट एम्पलीफाइज द साउंड वाइब्रेशंस। आपको पता है लाउड स्पीकर हम लोग यूज करते हैं क्यों? हमारी आवाज को एम्पलीफाई करता है, वो हमारी आवाज को इंक्रीज करता है। तो वही काम इस इन तीन ईयर बोन्स का है। Then we have this eustachian tube. Beta, eustachian tube is that structure which connects the middle ear with the throat. हमारे मिडिल ईयर को थ्रोट से ये स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है। इसका काम क्या है? इट इक्वलाइजेस द एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम है, ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम इट इक्वलाइजेस द एयर प्रेशर on either side of the eardrum so that it vibrates freely. Now we have the three semicircular canals. Beta, these three semicircular canals basically iska kaam kya hai? They are responsible for the balance of the body. They help in the balancing of the body. Right. So you can see at the base of the semicircular canals, you find ampulla. It's a swollen part and is filled with a fluid, जिसको हम कहते हैं ampulla of semicircular canals. इनका काम क्या है? It is responsible for the dynamic balance of the body. Then we have the utriculus and sacculus. These two structures, they're responsible for the static balance of the body. Then we have the cochlea, the spiral shaped structure. This cochlea, it helps in hearing. Then we have this auditory nerve. It is a sensory nerve, the way we have done in the human eye, optic nerve, sensory nerve. Likewise in ear, we have the auditory nerve. This auditory nerve, it carries impulses from the ear to the brain. It carries sound impulses from the ear to the brain. So there are certain reason-based questions connected with the human ear. Let me discuss with you, beta. It is always advised that we should not put any pointed objects into the ear. Why? Because if we put any pointed object into the ear, what happens? It may rupture the eardrum and the person may become deaf. Yes. Now there's one more important reason-based questions. It had come in the board paper long time back. कि थ्रोट इन्फेक्शंस में लीड टू ईयर इन्फेक्शन। अगर कभी गले में इन्फेक्शन होता है बेटा तो उससे कान में इन्फेक्शन हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग थ्रोट इन्फेक्शन या को कॉमन कोल्ड हो गया है, जुकाम हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, व्हाट हैपेंस? द अस्टेशन ट्यूब गेट्स ब्लॉक्ड। वो ब्लॉक हो जाती है ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड और थ्रोट इन्फेक्शन में। तो जो ये मिडिल ईयर से जो लिक्विड ट्रिकल कर रहा है, जो जो एक टप टप करके बूंदे गिर रही हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से द वायरस स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड इट मे लीड टू ईयर इन्फेक्शन. So how the throat infection may lead to ear infection? During throat infection, what happens? The eustachian tube gets blocked and the liquid which trickles from the middle ear gets collected on the way and the virus starts growing, which may lead to ear infection. There is one more reason-based question ki, the pilots who fly the planes, if the pilot is suffering from common cold, he is not advised, he is not permitted to fly the planes. क्यों? अगर किसी को पायलट को थ्रोट इन्फेक्शन है या जुकाम है, उनको परमिशन नहीं दी जाती है एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए. क्यों नहीं दी जाती है बेटा? रीज़न क्या होता है कि अगर ऐसा तो नहीं है कि वो कॉकपिट में बैठ के अपनी मर्जी से उड़ा रहा है, नहीं, उसको हमेशा नीचे एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ में संपर्क में रहना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, वो एटीसी वाले उसको डायरेक्शंस देते रहते हैं, राइट. तो अगर उसको कॉमन कोल्ड होगा, कॉमन कोल्ड में मैंने क्या कहा था, स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है. जब ब्लॉक हो जाएगा तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा. इसका काम क्या होता है? ये जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम को क्या करता है? ईयर ड्रम के आगे और पीछे एयर प्रेशर को इक्वल करके बना के रखता है. तो जब स्टेशन ट्यूब इसका ब्लॉक्ड हो तो दिस स्टेशन ट्यूब विल नॉट बी एबल टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर ऑन अदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम. So what will happen? The pilot will not be able to hear properly. This is the reason why he is not permitted to fly the planes. So this spiral shaped structure beta आपको जो नजर आ रहा है, इसको हम कॉकलिया कहते हैं. कॉकलिया बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन हियरिंग. बट ये कॉकलिया इतना आसान नहीं है बेटा, इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा. और इसके अंदर हमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ. I'm showing one structure.
of cochlea. Let's see what is inside the cochlea. Cochlea मैंने आपको क्या बताया? It is a spiral shaped structure, right? It is a spiral shaped structure which helps in hearing. But what is inside the cochlea? Just see बेटा. कॉकलिया के अंदर क्या है? और आपको मैं बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बताऊंगी बेटा, ये बड़ा काम में आता है. इस कॉकलिया के अंदर 3 केनाल्स है. केनाल समझते हो? जैसे आपने जियो में पढ़ा केनाल, नहर. नहर है, केनाल्स है. दीज 1 2 3. अब इस केनाल का नाम हमें कैसे याद रखना है? ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला मैंने बताया. आपकी विजया मैम क्या है? विजय मैम टीचर है ना, तो आपका यही फॉर्मूला है. विजया, वी फॉर विजया, M for ma'am, T for teacher. Yes, विजया मैम टीचर. आपके जितनी भी सीनियर्स हैं, वैभव केनास, his brother, ठीक है, तो शान से पूछ सकता है, यही फॉर्मूला मैंने उनको भी बताया था.